Okay, guys, I see many of you have joined, so we can start. Can someone please confirm if my screen is visible? Yeah. Okay. So were you able to see the website one on VM1 for using Yes, the same IP? Right? So this is yes. how the load balancing works, guys. Now we had only two servers, a very small setup. You may have 5, 6, 10 virtual machine scale set behind it, whatever you want. Got it? Now, if I take RDP, will it only go to VM1 or can it go to VM2 as well? If I take the RDP of same machine, will it go to only VM1 or it may go to VM2 as well? RDP using load balancer's IP address. What do you think, guys? If I do this and take RDP, will it go to only VM1 or it can it go to VM2 as well? Your website is not working on VM2, hence it is definitely going to VM1. Every time you access this website, now it will only go to VM1. But my question is, if I do the RDP to same server, what do you think will happen? Both. And why both? If website is not working, why do you think the RDP will work? Yes, guys. See, answer is correct. It is going on both. But why? Server is up and running and website is different, right? Yeah, yes, perfect. Because just because website is not working doesn't mean that your server is down. सर्वर डाउन है तो ऑब्वियसली सब कुछ ही डाउन है. इफ सर्वर इज शट डाउन, ठीक है, देन वेबसाइट भी नहीं चलेगा, आरडीपी भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा. लुक एट दिस, आई वेंट टू VM2, बट इफ यू एक्सेस वेबसाइट यू विल ओनली गो टू VM1. व्हाई? बिकॉज सर्वर का बंद होना इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड वेबसाइट का बंद होना इट्स अ डिफरेंट थिंग. राइट? लुक एट दिस इज इट्स गिविंग मी एरर एज वेल. ये सर्विस जो है मेरी बंद है. इफ आई स्टार्ट दिस सर्विस, वेबसाइट भी चलने लग जाएगी. बट irrespective दिस सर्विस इज up or running or shut down or whatever it is stopped, it is not impacting my RDP. Hence, when I take RDP, it can go to any server. But if I access a website, then it will go to only VM1. But now I have turned on this service, so it can go anywhere. लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा कहाँ भेजना है? लोड बैलेंसर इन एवरी 5 सेकंड लोड बैलेंसर इज चेकिंग वो पोर्ट 80 ओपन है या नहीं है. वेयर डिड वी आस्क लोड बैलेंसर टू डू दैट? हियर इट इज. हेल्थ प्रोब में हमने बोला था लोड बैलेंसर को दैट यू शुड चेक port 80 on that server every time. Got it, guys? Yes, no, maybe. Any doubt, any questions? Yes, yes. Now, this we have done only for RDP and we have done only for website. It could be for FTP also. FTP is nothing, your फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां पे बहुत हैवी फाइल वगैरह ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए भी हो सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन गेटवे एंड लोड बैलेंसर. दैट load balancer can be used for website, it can be used for RDP, it can be used for FTP, for that matter it can be used for any protocol. But application gateway can be used only for HTTP and HTTPS traffic, only for web traffic. That is one difference. Cross region machines, how to add, we have seen that, right? Now, okay. By the way, what do you think, guys? This load balancer, what is it exactly? Or before that, one question: did we have load balancing technique before cloud? Anyone knows? क्लाउड के पहले भी लोड बैलेंसिंग जैसी कोई चीज होती थी या नहीं? भी शायद Yes. 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 Let me show you. I'll take remote of one of the machines, any machine now. It doesn't matter.
I'll directly go to machine because what I'm showing you now, it has nothing to do with load balance, Azure load balancer, right? So now if I show you this, I go to manage, add roles. Like web server is one of the roles. ये जो है पूरा सर्वर है, इसका एक रोल है वेब सर्वर. वेब सर्वर से हमको क्या होता है, क्या फैसिलिटी मिलती है, दैट वी कैन होस्ट अ वेबसाइट ऑन दिस सर्वर. दैट इज योर वेब सर्वर रोल. सिमिलरली सर्वर में बहुत टाइप के रोल्स होते हैं. एक्टिव डायरेक्टरी एक रोल है, डीएनएस रोल है, डीएचसीपी है, फैक्स सर्वर है, वर्चुअलाइजेशन है, हाइपर भी कर सकते हो आप, राइट? Remote desktop services hai. There are n number of roles. What we are interested here is, can you see what is it, guys? What is it written here? The one which I have selected, failover clustering. Now cluster का मतलब होता है आपका लोड बैलेंसिंग. यहां पर ये क्या करता है, चार पांच सर्वर को मिलाकर it allows you to host one website, have one public IP or any IP for that matter, have one IP. और सिमिलरली जो लोड बैलेंसर आपको सर्विस दे रहा है वो आपको ये सर्वर भी दे सकता है. अंडरस्टूड? सिमिलरली कि एक सर्वर फेल होता है तो ये दूसरे पे भेजेगा, हेल्थ चेक करता रहेगा, एवरीथिंग सेम. गॉट इट गाइस? So it is not an invention of Azure. It was already there in other operating systems and including Windows. Is this point clear? Yes. Yeah. So the load balancer which we have, right? It is not what it is according to you. वो कोई बस आपको जो है बाहर से एक सर्विस दिख रही है, एक आइकन दिख रहा है, बट एट द बैक एंड वो इन्हीं सर्वर्स पे बना हुआ है. नाउ आई डोंट नो वेदर इट इज ऑन माइक्रोसॉफ्ट, इट इज ऑन लिनक्स, पर ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो आई थिंक वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे ही बना होगा. सो द लोड बैलेंसर विच वी आर यूजिंग, वो लोड बैलेंसर के पीछे भी सर्वर्स है. वी आर कॉलिंग इट एज अ लोड बैलेंसर. व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन गेटवे एज वेल, एप्लीकेशन गेटवे भी किस पे चल रहा है, एप्लीकेशन गेटवे भी किसी सर्वर पे ही चल रहा है. मतलब ये सर्वर ही आपके लिए ये सब कुछ कर रहा है. But the only difference is you are not managing those servers. You are not working on those servers. You are not selecting whether it has to be Windows or Linux. You are not selecting कि ये सब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका पैचिंग कब होना चाहिए, इसमें रैम कितनी होनी चाहिए. You are not doing all these things. बट अल्टीमेटली लोड बैलेंसर के पीछे भी एक सर्वर ही होगा जिसपे किसी इसी तरह का रोल होगा. इफ इट इज विंडोज देन डेफिनेटली दिस रोल विल बी देयर, जो आपके लिए ये सब सब कुछ राउटिंग वगैरह जो कर रहा है. गॉट इट गाइस? Yes. So what kind of Yeah. service it is when I say load balancer and application gateway, ये किस कैटेगरी में आता है? The types of services which we have seen, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Platform. Yes. So these are platform as a service. Got it? Your application gateway, traffic manager, load balancer, ये सब platform as a service है. क्यों? ये सब होता सब कुछ सर्वर पे ही है. No matter nowadays, in fancy language you call it serverless architecture, etc., etc., but ultimately at the back end behind everything, it is a server. उसके बिना कैसे चलेगा? How do you think the load balancer is working? Load balancer ये सब कैसे कर पा रहा है? It is a server. Got it? So can that server be down? अब पीछे why did I show all you why did I show you this? ये सब क्यों बताया मैंने लोड बैलेंसर केस में? डू यू थिंक द लोड बैलेंसर अल्टीमेट सोल्यूशन कभी डाउन नहीं हो सकता है? हो सकता है ना. यस, इट इज अ सर्वर अल्टीमेटली, राइट? व्हेन इट इज अ हम्म. सर्वर तो वो भी डाउन हो सकता है. सो इट इज इट कंप्लीटली, मतलब ऐसा हो सकता है कि 100% कोई क्लेम कर सकता है कि आपका एप्लीकेशन कभी डाउन ही नहीं होगा? नो. दे कैन No. नॉट. ऐसा तो व्हाई? नहीं होगा. बिकॉज यस, अल्टीमेटली वहां पर भी एक सर्वर ही है, राइट? आई हैव बीन saying this joke many times. बहुत बार मैंने बताया भी है. आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव सीन इट और नॉट. वो एक आपका स्कूबी डू में कार्टून आता था, राइट? इफ यू रिमेम्बर, दैट यूज्ड टू बी कि उसमें वो एक गोस्ट वगैरह बताता है, एंड देन वे दे पिक अप द
दिस वन मास्क, एंड दे सी कि इसके बिहाइंड तो यार ये कोई इंसान ही है, जो होटल मैनेजर है एटसेट्रा, ये है जिसने कंप्लेन की, वही है. लुक एट दिस वन, आई हैव जस्ट downloaded for you. So this is how it is. When you call it serverless computing, when you say it serverless application, serverless XYZ, what is it exactly? उसके behind क्या होगा? एक server ही होगा. Is this point clear to everyone? So don't think कि वो कभी down नहीं हो सकता. Just because it is a load balancer और application gateway, वो कभी down ही नहीं होगा. Is that the case? No. No, right? There is a server. And now why did I have to explain this much? Because when we go to application gateway, वहां पर हम इसमें और थोड़ा सा हम लोगों को granular access मिलता है, and we'll be able to see. Now the other applications which we are going to learn, like web app, I told you, right? In web app, I can host my website without a server. But this is as in Azure language. Do you think I'm actually hosting my website without a server? No. Web app के पीछे भी क्या है? Hmm. एक server Hmm. ही है. So no matter which PaaS services we are talking about, a server will always be there behind it. But we don't have to worry about the server. I don't have to install that rule. I don't have to worry कि कितना RAM होगा, क्या होगा. I don't have to take backup of that server. I don't have to do anything. Hence, it is a platform as a service for me. Got it? Yes, guys. Is it clear to everyone? Yes. Yeah. So this is again not a completely highly available application. Why? Because आपका load balancer जो है, वो लोड बैलेंसर भी एक सर्वर पे है, एंड दैट सर्वर कैन गेट डाउन, शट डाउन, और कभी कभार आपका ये हो सकता है, शट डाउन हो सकता है, सर्विसेज डाउन हो सकती है. बट देन इट इज आउट ऑफ योर स्कोप एज एन अज्योर इंजीनियर और प्लेटफॉर्म इंजीनियर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. आउट ऑफ योर स्कोप. अज्योर का डाउन है, अज्योर विल पे फॉर दैट. अज्योर ने अगर 99.99% का SLA प्रॉमिस किया है, तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोड बैलेंसर डाउन होगा तो आपको कोई टिकट नहीं आएगा. आई मीन, यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन, so you can inform your clients. You don't start troubleshooting unnecessary. आप अपने सर्वर पे ही ट्रबल शूटिंग ना करने लग जाओ. क्या कोई बोल रहा है एप्लीकेशन डाउन है, एंड आपने अपने सर्वर्स को रिबूट करना शुरू कर दिया, सब कर दिया, एंड लेटर ऑन माइक्रोसॉफ्ट 2 घंटे बाद बता रहा है कि नहीं, वो एक्चुअली लोड बैलेंसर डाउन है. दैट इज नॉट द केस. सो यू गेट द नोटिफिकेशन, बट डू यू हैव टू डू एनीथिंग? डू यू हैव एनी स्कोप कि आप जाके लोड बैलेंसर के सर्वर्स को ट्रबल शूट करोगे? नो. दैट इज योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. गॉट इट गाइज? Yes. Fine. So now we'll stop here for load balancer and we'll start application gateway. उतना ही equally, in fact, I would say ज़्यादा important है इससे. Most of the time they will be asking, utilize भी ज़्यादा ये होता है, because RDP जो है ना, I just showed it to you for your understanding. No one will actually use RDP के लिए load balancer, कोई नहीं use करता है, कोई भी नहीं. But yes, as a technical answer you can give कि भाई मुझको 4 सर्वर्स पे RDP ये करना है and public IP use नहीं करना है. So you have Bastion, you have load balancer as well. You can use that. Though it never uses, कोई use नहीं करता है, but technically it is there. So we were talking about differences, guys. Differences मैंने आप लोगों को बता दिए काफी, जो इस टेबल में है वो, and slowly मैं एक point बता रहा था. I hope you guys have noted down somewhere. Right. So now let's start talking about the application gateway. So what is an application gateway? Again, very first thing, application gateway is a regional service. What do you mean by regional service? Yes, guys. What do you mean by regional and global service? Local. It is a dependency of regions. It has but not of regions. dependency. It has dependency on region. So when I install or when I opt for application gateway, right? And behind that, if I have multiple servers, still I do have that fear कि ये regional base है. अगर let's say my application gateway is in East US and my servers are in West US, is that possible, by the way? My application gateway is in No. East US and all my servers in West US. Is it possible? No. Why not? We just discussed, guys. Yes, it is possible, VNet na? Same Yeah, as yeah, load yeah. balancer. Exact Yeah. exact Yeah. concept of load balance. It is possible, but why would you do it? You would say कि यार मुझको regional ये चाहिए, redundancy चाहिए, that even if one region is down, then I will get redundancy. No, you're not getting any redundancy. Let's say your servers, they are in scattered format, shattered format, maybe in
वेस्ट यूएस में 2 है, ईस्ट यूएस में 2 है, ठीक है, वहां पर आपने रिडंडेंसी ले ली, बट योर एप्लीकेशन गेटवे इररिस्पेक्टिव विच रीजन इट्स ओनली वन। अगर वो ईस्ट यूएस में है तो वो सिर्फ ईस्ट यूएस में ही है, एप्लीकेशन गेटवे पे कोई रिडंडेंसी नहीं है। सो इफ ईस्ट यूएस रीजन इज डाउन, नो मैटर आपके बैकएंड के सारे सर्वर अप है, योर एप्लीकेशन इज स्टिल डाउन। गॉट इट? Yes, Yes. guys, is it clear the point? So it is a regional service. Though you get zone redundancy in some SKU, we'll discuss about it. What is zone redundancy? If I say regional redundancy is not there, but zone redundancy is there, what do you mean by that? Availability zone should be Yes. hmm. कि उस पर्टिकुलर जोन में आई कैन हैव 3 डेटा सेंटर, सेम जो अवेलेबिलिटी जोन वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना। इसीलिए गाइस आई एक्सप्लेन्ड यू कि इसके पीछे भी सर्वर्स है। डोंट थिंक कि ये कोई हवा में चल रही सर्विस या फिर कुछ ऐसा है। behind that also servers are there, तो application gateway के पीछे भी servers है। so if I take zone redundancy, मेरा application gateway जिन servers पे होगा वो zone में बटे हुए होंगे, maybe 3 servers will be there और एक एक zone में एक एक होगा। you don't have control over that, कितने servers होने चाहिए, किस zone में होने चाहिए, don't have any control over that। you just have to say or select ये zone redundancy चाहिए या नहीं चाहिए। got it? Is it clear guys? Yes. what about others other than Imran? Hanif, Kazi? Sohail bhai, it is mandate to have a zone No, no. redundancy to No, it it's is not not mandate, mandated. but It is it's impossible to have a mandate. Do we have zone redundancy in all regions, guys? No. No. तो आप अगर किसी ऐसे जोन में जा रहे हो जहां पर जोन रिडंडेंसी नहीं है तो वैसे ही आपको नहीं मिलने वाला है। एंड इवन इफ यू आर गोइंग समवेयर वेयर यू हैव जोन रिडंडेंसी, एग्जांपल पुणे वाला रीजन, बट स्टिल यू कैन ऑप्ट सिमिलर टू वर्चुअल मशीन्स। डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, सिमिलर टू वर्चुअल मशीन्स। बस यहाँ पर वर्चुअल मशीन पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप एप्लीकेशन गेटवे पे कर रहे हो, बट बैकएंड में वर्चुअल मशीन ही बन रही है। हनीफ, इज इट क्लियर? अनिकेत, मुनीर, प्रभात, शाहरुख, Yes, शाहरुख शेख, Yes. are you getting it? Yes. Surya, Tehsin, Sunil, you're quiet today. Are you getting it, Sunil? Yeah. Everything is clear. Great. So this we have already discussed in detail. It works only in HTTP and HTTPS. Now, what is HTTPS, guys? HTTPS is nothing but a secure Secure. website, right? बैंक वगैरह का वेबसाइट होता है ना आपका, तो वो सिक्योर वेबसाइट होता है। द मोमेंट यू से दैट आई वांट टू हैव अ सिक्योर वेबसाइट, तो उसमें एक और एडिशन आ जाता है, टू हैव अ सर्टिफिकेट। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, और लेट मी कम बैक टू दैट। फर्स्ट मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ डिफरेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वर्क्स ऑन लेयर 7। आई हैव ऑलरेडी शेयर दैट वीडियो जो आपको लेयर्स का थोड़ा सा बता देगा, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं जानना है। इट कम्स विथ WAF ऑप्शन। व्हाट इज WAF? इट्स, एनीवन नोज व्हाट इज WAF? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। Firewall. इट्स एग्जैक्टली लाइक आर फायरवॉल। जो हमने फायरवॉल देखा था एग्जैक्टली वही फायरवॉल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये एक सर्टेन एप्लीकेशन है, दैट फायरवॉल वी कैन पुट इट ऑन अ वर्चुअल नेटवर्क एंड हैव मल्टीपल रूल्स हियर। दिस इज अटैच्ड टू ओनली फॉर दिस एप्लीकेशन, डेडिकेटेड इस एप्लीकेशन के लिए एक फायरवॉल मिल रहा है आपको, इफ यू वांट। व्हाट काइंड ऑफ रूल कैन वी हैव कि इंडिया से ट्रैफिक आना चाहिए, बांग्लादेश से नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान से आना चाहिए, XYZ से नहीं आना चाहिए, यूएस से ट्रैफिक आना चाहिए, मैक्सिको से नहीं आना चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। You can control geolocations, same options which we have in our firewall, which we have seen already, exact same options you get here. Got it? Now, it has path-based routing. What is a path-based routing? This is very important. वहां पर हमारे पास पाथ बेस्ड राउटिंग कुछ नहीं था, ठीक है। लोड बैलेंसर में लोड बैलेंसर वाज जस्ट टेकिंग द पोर्ट्स और सर्वर को भेज देता था, right? Here what I can do, I can have the path based. Now what do I mean by path based? For one particular application, for example YouTube, I can have YouTube music and I can have YouTube videos, right? So if I go ahead and check this, this is how it will look. Let me bring it there. I'm writing something on notepad. I'll drag it there in a minute.
सो दिस इज हाउ इट इज गाइस। यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, ये एक पाथ है। यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब/वीडियोस एक पाथ हुआ, यूट्यूब/म्यूजिक एक पाथ हुआ। If in case YouTube had images, this could be one path. YouTube contact as ये दो पेज है, but this could be one path. ठीक है, कॉन्टैक्ट अस के लिए कोई नहीं बनाता है वैसे। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब होता है कि एप्लीकेशन तो एक है, बट इन्होंने वीडियोस के लिए 5 सर्वर्स अलग से बना रखे हैं। तो यूट्यूब विल हैव मेनी मोर सर्वर्स। ठीक है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, जस्ट शेयरिंग सम रैंडम नंबर्स विथ यू, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक, यहाँ पर म्यूजिक के लिए 4 सर्वर्स अलग बना रखे हैं। Images के लिए maybe 2 servers they have created, something like this. So this is your path base. So we can decide if traffic is coming, it should reroute it to YouTube videos. वहां पर load balancer हो, मतलब whatever you want to check, check with only these 5 servers. इनको consider भी मत करना. Whenever a request is coming for YouTube videos, don't ever bother about these servers. Just focus on these servers. When a request is coming for YouTube music, just bother about this one. Got it? This is your path based. Got it, guys? Is it clear? Any doubt? Like over there, we were just typing the user public IP or maybe website name. But here, when user types YouTube videos, it will ask to check only these servers. इनमें से जो up है उस पे जानी चाहिए request. इनमें से जो down है उस पे request नहीं जानी चाहिए. Is it clear, guys? Yes, no, maybe. Any doubts? Any questions? Yes. Yeah. Another requirement which is not there in load balancer, this can be, you can say this as a difference as well. We required a subnet. SSL termination, I'll come. Subnet, a dedicated subnet, like we had for application gateway, we had for Bastion, we had for firewall. But a slight change is here. It's not name specific. However, it has to be dedicated. Now, what do you mean by not name specific and dedicated? Dedicated का मतलब हुआ कि इस पे, उस वाली सबनेट पे आपका सिर्फ जो है ये होगा, एप्लीकेशन गेटवे होगा। उसके अलावा यू कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स। यू कैन नॉट हैव वर्चुअल मशीन्स, यू कैन नॉट हैव वेब ऐप, यू कैन नॉट हैव स्टोरेज, कुछ नहीं हो सकता उसके ऊपर। वो सबनेट डेडिकेटेड होगा आपके एप्लीकेशन गेटवे के लिए, राइट? बट देयर इज नो नेम बाउंडिंग नहीं है, लाइक वी हैव फॉर Azure Bastion firewall, sorry, Azure Bastion subnet. Similarly, we don't have the name binding here. Is this clear, guys, to everyone? The name Yes. should be anything. Name can be anything. Can be anything. Got it? Front end में we can have only one public IP and one private IP if needed. But we cannot have multiple. As in ये दो का combination हो सकता है. We cannot have multiple public IP addresses. Is this clear, guys? Yes. Backend में in load balancer we were able to add only virtual machines. It could be virtual machine scale set, virtual machine in availability zone, availability set, but virtual machines and IP addresses. So here we can obviously add IP addresses, we can add VM, we can add VMSs. But the difference here or addition here is we can add web app. Web app क्या है? एक सर्विस है Azure की. We are going to see that later जब हम PaaS services करेंगे डिटेल में. ठीक है, वेब ऐप एक सर्विस है जिसके ऊपर आप वेबसाइट अपनी होस्ट कर सकते हो. So that you can add as a backend in your application gateway. And you can also, by the way, you can also add load balancers. You can add load balancers as well. Got it, guys? Is it clear till here? Yes, A no, little maybe. bit confused about load balancer. Sohail bhai. Application gateway is a competitor of load balancer, right? It is not a competitor. See, all are Azure products. They have Yeah. multiple products and you can use them in combination. If you want to use in combination, you can use application gateway, and behind that you can put load balancer. If you remember this one, जैसे हमने ये लोड बैलेंसर के पीछे लोड बैलेंसर यूज किया था, इफ यू रिमेंबर, बस इस लोड बैलेंसर को हटा दो यहाँ से आप, एंड यू गेट योर एप्लीकेशन गेटवे हियर. अच्छा.
Do you guys remember this image which we discussed? Yes. Yes. So similarly, very simple. Just initial load, जैसे आप load balancer के पीछे load balancer रखते हो, उसी तरह से you just remove those first load balancer, वहां पे application gateway से replace कर दो. बाकी पूरा logic same है. Got it, guys? Okay, understood. Right. So now before we go ahead for listener and path-based routing, WAF, etc., let's discuss your SSL termination. This is the unique thing which you have in your application gateway. And because of this only, most of the companies, most of the application will use application gateway, and most of your questions will be based on your SSL termination. You should know what is SSL termination. Even if you don't practice, I don't think so and we will be able to do the practical. उसके लिए मुझको certificates वगैरह download करना पड़ेगा. I'll see by tomorrow if I can get it. We'll do the practical. Otherwise, आपका theory part I'll make sure that you understand it well. We are going to discuss it in detail, and let's see whether you get it or not. And if you don't get it, we'll explain it again. If you don't get it well, then I'll do the practical for you guys. But I don't think so we'll require the practical. Right? So let me log into server and then I'll show you. I hope that point is clear for everyone, right? How you are going to use back load balancer behind the application gateway. Not necessary जो उस image में Yes. बताया था, not necessary in that manner. You can have direct load balancers as well. मतलब virtual machines वगैरह के बजाय आप select करो IP and behind that you select your this one. You select your load balancer. Load balancer का IP वहां पर दे दो. वो भी आप कर सकते हो. Just 1 minute, guys. Okay. So the websites which we have been using now or which we have been practicing, right? You must have seen यहाँ पर एक error आता है, which says this is not secure. Look at this. Can you see this? It says it is not secure. Your connection to site is not secure. Yeah. What does it mean? It means that it is not encrypted. Now I'm just accessing the page. What if I had to log in something? अगर मैं कुछ login वगैरह करता है इसके ऊपर, right? तो how it would work? Let me drag it here. Okay. So if I log in, this is my browser, and if I access my UT Cloud or etc. anything, if it is not secure, instead of HTTPS, it is HTTP, which is working on port 80. If it is not secure, और मैं कोई यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रैफिक ही करता हूँ, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड that will be routed to my server, or in this case application gateway, or let's discuss server first, basic, right? So if I have a server here, let's say this is a server, my web server, right? And I am accessing the traffic, I'm accessing some sort of website or anything, right? From my laptop. This is my laptop, and a user is sitting here, and from here this user is accessing something here. So whatever user ID and password and it types here, it is going through the internet to this server, right? It is going through the internet to this server. So if it is not encrypted, if it is not on 443, then anyone can sniff in my network और वो उस information को fetch कर सकता है. It is in plain text format. यहाँ से let's say मैंने यहाँ पर लिख दिया that facebook.com. facebook.com से जो है let's say this is your laptop, client laptop, okay? And this is Facebook's server.
So now if you search for facebook dot server, वो आ गया यहाँ पर, आपने अपना user ID and password डाला. So this user ID and password which is traveling, why? Because for facebook.com to show your account, it will ask for your user ID and password, and then you are sending your user ID and password from here to here. तो ये जो traveling है, this is over the internet. Any smart hacker or even a basic hacker can sniff into your network, और ये जो plain text में आपका user ID और password जा रहा है उसको वो hack कर सकता है, and later on he can send the request to facebook.com because now he has your user ID and password and can be used for anything. Got it? This is your not secure website, a plain website which we have been looking at. अब वो plain website कैसे दिखती है? The one which is hosted on my server, जो यहाँ पर hosted है, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को. Because it doesn't have any certificate, but now it is a banking application, right? You don't want to compromise with your user ID, your password. So your bank is thinking that we should have one secure website जहां पर whenever someone sends a request or user ID and password, and for that matter any request, it should be in encrypted mode. It should be in encrypted mode. So how will it work? वो यहाँ से आप जो है, if you do your if you make your website secure, HTTPS, which works on port 443, वेबसाइट काम करती है अनसिक्योर्ड वाली पोर्ट 80 HTTP, सिक्योर काम करती है पोर्ट 443 HTTPS. So the moment you type your user ID and password here, यहाँ पर because you have the certificate, right, to make it secure you require a certificate. Because you have a certificate here, तो ये user ID and password जो है ये encrypt हो जाता है यहाँ पर. It gets encrypted यहाँ पर, and then it travels with the encryption. Encryption के साथ travel करता है. And because you have a certificate here, server पे यहाँ पर वो decrypt हो जाता है. So if anyone is able to sniff into your network उसके हाथ भी लग जाए, तो वो password plain text में नहीं होगा. This you can achieve using your secure website. So to have a secure website क्या करना पड़ता है? Similar website, let's say ये वाली website जो है UT Cloud वाली website I have hosted here, right? This is a plain one. If I go to bindings, you don't have to worry what settings I'm doing here because this will not be your job. This is for your understanding. But look at this. Port 80 पे है ये hosted, right? Hence it doesn't require any certificate, but ये encrypted भी नहीं है. But if I want to host this on HTTPS, so the moment I do that, I do not get OK button unless I upload a certificate. If you remember, we have checked the certificate and we have discussed the certificate in our which practical, guys? Anyone remembers which practical are we talking about? VPN. Which VPN? To be specific? Site to Gateway. site. Point to site, not site to site, Point point to to site. Point to site. तो आपने एक सर्टिफिकेट बनाया था, then you gave it to one. But in this case, point to site में you have limited number of users. आपको पता होता है कि आपके internal users है. Hence you were able to create a certificate and give it to someone. But the concept is same. Lock and key वाला concept is same. But here what you have to do, you have to purchase a certificate and it's very costly. $200-300 dollars का आता है approximate for 1-2 quarters, I guess. Right? So it's costly thing. Right? But how it works, that certificate provider which are there in the market, one of them is GoDaddy, BigRock, and there are many. जो भी website बेचते हैं, domain बेचते हैं, they also sell certificates. So if you purchase a certificate from them, so they will put a lock on your server or key on your server, however you want to call it, key on your server, and they will make sure that it is available across the browser because you cannot give it to end user. Right? आपकी वेबसाइट है, फेसबुक के मिलियन ऑफ यूजर्स है, कैन दे सेंड सर्टिफिकेट टू एवरीवन एंड आस्क देम कि यार ये सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लो बिफोर यू एक्सेस आवर वेबसाइट? इज इट पॉसिबल? Yes guys, is it possible for youtube.com No. and for everyone कि यार ये सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल कर लो? Not every end user will receive it, they will not be able to install it, they won't be able to do it. So it is the job of the certificate provider to do that कि ये हर ब्राउजर पे जितने भी ब्राउजर्स अवेलेबल है, क्रोम, एज, सफारी, इनके ऊपर इनसे टाइप करके, इनकी कंपनी से टाइप करके मेक श्योर दैट द लॉक सर्टिफिकेट इज ओवर देयर एंड दे ही विल गिव यू द की सर्टिफिकेट टू यू. वो लॉक सर्टिफिकेट अपने आप ब्राउजर में होगा. यू गाइस डोंट हैव टू डू एनीथिंग एज एन एंड यूजर. सो द मोमेंट एंड यूजर
टाइप्स समथिंग, एनी बैंक का वेबसाइट वगैरह कुछ भी ये करता है ना, तो वो अपने आप जो है उसको सिक्योर वेबसाइट पे ले जाता है, राइट। एंड वहां पर डेफिनेटली जो है एक सर्टिफिकेट वहां पर होता है, एक सर्टिफिकेट वहां पर होता है। इफ आई ओपन SBI, look at this, if I open SBI and if I click here, can you see it shows the connection is secure? What does it mean if I click here? Connection is secure, ये देखो certification is valid, SBI को जिसने भी ये सर्टिफिकेट इशू किया था, this certificate is valid. Look at this. We are not getting into certification study now. वो एक अपने आप में डिटेल है, if you have Windows का नॉलेज थोड़ा बहुत होता है, but they are not going to ask you, don't worry. But certificate is there. That is the reason you are able to access. ये कब expire हो रहा है? 25th July, 15th June 2025. If SBI doesn't renew it on time, तो उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है अनसिक्योर हो जाएगी। Got it? So they did not give it to me. SBI ने मुझको नहीं दिया है। It is there in Chrome browser, Edge browser, कहीं से भी आप sbi.com डाल दो, online.sbi डाल दो, वो सर्टिफिकेट उसके साथ बाइंड होके अपने आप आ जाएगा, right? So this is how the certificate works. With the help of this certificate, what will happen, guys? Now, in the column of user ID and password, when I type my user ID and password, वो उस certificate के साथ encrypt हो जाएगा. It will travel to your SBI server, and SBI server will have one certificate, the one which I showed you here, जो मेरे सर्वर पे था, right? वहां पर I will install that certificate, and with the help of that certificate, this value will be decrypted. और जैसे ही वो वैल्यू डिक्रिप्ट होगा, देन सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि आपने जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया वो सही है या नहीं है, शुड आई शो यू योर अकाउंट बैलेंस और नॉट, या फेसबुक अकाउंट बताना है या नहीं बताना है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? As of now, we are not talking anything about application gateway. I'm just trying to explain you how the certificate works. अब वो certificate से related what feature do we have in application gateway that we are going to see. But before that, you should understand how the SSL, what is the certificate, what is the secure layer, how it works. So is this part clear, guys, to everyone? That what happens when you access a website on port 80, which is unsecure, and what is the difference when you access the same website on secure layer 443? Is this clear, guys, to everyone? Yes. Yes. No, maybe. Yes. Yes. So now what happens, guys, when I have a certificate और जहां पे मुझको decrypt करना है, then authentication देना है, what will happen? As a result, my server will be a little bit of slow. जो response मुझको millisecond में आना चाहिए था, now it is going to take 2 seconds, 3 seconds. So ultimately your application is working slow. Performance पे उसका impact पड़ता है, right? Secure website होती है तो performance पे उसका impact पड़ता है. That is the point. And to overcome that, how application gateway helps us, that we are going to see in next lecture, in next session. We have only 1 minute left in this one. So if anyone has any question, please ask me, or we'll take a break of 5 minutes. I'll see you guys at 4:25, and then we'll start learning this feature of your application gateway. ये आ जाता है आपको तो इसके बाद application gateway load balancer थोड़ा बहुत similar है. We are not doing the practical today, just the theory part. So anyone has any question, guys? No. Okay, then let me stop the session, take a break of 5 minutes or 4 minutes in this case. Let's come back using the same link by 4:25.